नमस्कार। सूरज सिंह। भारत का संविधान, जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370। बहुत कुछ कहा जा रहा है इसके बारे में आजकल। आर्टिकल 370 जो टेम्पररी प्रोविजन के अंदर आता है चैप्टर 21 में। लेकिन ये टेम्पररी प्रोविजन एक समय था कि कोर्ट ने कहा था, एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अब एक तरह से परमानेंट हो चुके हैं। आर्टिकल 370 क्यों आया, प्रश्न उठता है। अपने आप तो नहीं आया। भारत आज़ाद हुआ, सब जानते हैं, स्वतंत्रता मिली 1947 में। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा देश था, उससे राज्य नहीं कह सकते क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। वो अलग रहना चाहता था, हमारे भारत में नहीं आना चाहता था। वो ब्रिटिश में भी मिलने गया उनके एक राजा से, जॉर्ज फिफ्थ से, मुझे अलग रहना है, हम भारत में ना पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। लेकिन ब्रिटिश ने कहा कि हम एक्ट पास कर चुके हैं और हमारे हिसाब से दो ही देश बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान, जो हमने कहा है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने किसी तीसरे देश को नहीं माना और साफ साफ मना कर दिया राजा हरी सिंह को कि आप जाइए, आपकी इच्छा है तो भारत में जाइए, आपकी इच्छा है तो पाकिस्तान में जाइए, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हम आपको अलग नहीं देश बना सकते, घोषित कर सकते। ये सीधा साधा उनका जवाब था किंग जॉर्ज फिफ्थ का। परेशान हुए बेचारे। उससे पहले वो लिख के दे चुके थे एक पेपर पाकिस्तान के जिन्ना को कि हम आपके पास आएंगे, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ था और इस बात से पाकिस्तान को गुस्सा आ गया। उसके बाद उन्होंने तंग करना शुरू किया उनको, क्योंकि उन्होंने ना तो भारत को लिख के दिया, ना भारत में आए, ना पाकिस्तान में गए। वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। कुछ महीने ऐसे ही बिता दिए। फिर क्या था, पाकिस्तान ने अटैक करना था, उन पर अटैक कर दिया। सीधा नहीं किया, स्टेट अटैक ना करके काबिलियों की ड्रेस पर अटैक करा दिया और बेचारे परेशान हो गए। वो जानते थे कि उनको हेल्प नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने कहा क्या किया जाए। काबिलों ने गलत काम शुरू कर दिया उनकी पब्लिक के खिलाफ, जम्मू कश्मीर की पब्लिक के खिलाफ। लूटपाट, दुकानें लूट, मकान लूट, आग जले, ये वो बलात्कार। तो मजबूर होकर उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा मैसेज की, ठीक है भाई, हम भारत में आ रहे हैं, हमारी हेल्प करो। क्योंकि वो जानते थे कि भारत हेल्प में से नहीं करेगा, किसी दूसरे कंट्री के यूएन चार्टर अलाउ नहीं करता है। तो यूएन चार्टर को अलाउ करने के लिए, उसकी परमिशन होने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, हम भारत में आना चाहते हैं। और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको कहा जाता है आज की तारीख में, साइन करके कंडीशनल सब्जेक्ट्स में उन्होंने सीधा साइन नहीं किया उसमें कि अनकंडीशनल एक्सेस कर रहे हैं। उन्होंने कंडीशंस डाल दी और भारत में आ गए। भारत में आने के बाद फौजें भारत की वहाँ चली गई और उन्होंने वहाँ से जो भी करना था, फुल एक्शन लेना था, आर्मी ने ले लिया। ये तो बैकग्राउंड है। अब हरी सिंह ने जो लिखा, राजा हरी सिंह ने, उसमें कंडीशन से डाल दी कि हम आपकी मिलिट्री को हम मानेंगे, जो भी होगी अपनी रक्षा के लिए, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे उनको हम मानेंगे, और जो भी टेली कम्युनिकेशन उस टाइम की थी उनको हम मानेंगे। इसके पार अलावा कोई भी इशू जो होगा, कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक जो होगा, वो हमारे अपने हिसाब से चलेगा। और हम आपके संविधान को नहीं मानेंगे जो भी होगा, क्योंकि उस टाइम संविधान नहीं था 1947 में। उस टाइम चलता था हमारे ऊपर एक्ट पुराना, जिसको कहते हैं 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आपको शायद सबको मालूम नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 चला करता था भारत के ऊपर शासन करने के लिए। उस टाइम तक वो चलता रहा था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस टाइम बना नहीं था। खैर, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ थे प्रेसिडेंट की पोजीशन में, गवर्नर जनरल की पोजीशन में, उनका राज चलता था 3 साल तक। ये तो है हिस्ट्री। उन्होंने साफ लिखा कि जो भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन हम माने ना माने, हमारी मर्जी, हम नहीं मानेंगे। यूनिफिकेशन के लिए जो चला उस टाइम आज़ादी के बाद, तो सारे स्टेट्स ने, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, बाकी सब ने कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए कहा था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बना तो उन लोगों ने अपने असेंट दे दी कि हम इसको मानेंगे। हर स्टेट की एक पब्लिक कॉन्सेंट थी, एक तरह की कह सकते हैं रेफरेंडम था हर स्टेट का। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा भाई ठीक है, अब ये आ गए हमारे पास और ये झगड़ा भी हो रहा है दोनों देशों का, सुलझ नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यूएनओ में जाइए। और ये कहा उसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, यूएनओ में जाइए और वहाँ से पाकिस्तान की शिकायत कीजिए कि इस तरह से हो रहा है। ये पहुँचे वहाँ और वहाँ पर वो साहब भी पहुँचे हुए थे, पाकिस्तान वाले।
बातचीत हुई और ये हुआ ये कि यूके एंड यूएस से कन्विंस हो गए कि ये झगड़ा किया गया है, और उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि आपको रेफरेंडम करना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंडम जरूरी था यूनिफिकेशन में। बिना रेफरेंडम कोई भी स्टेट पाकिस्तान में या भारत में नहीं आ सकती थी, ऐसा प्रैक्टिकल था। तो खैर वो बहुत पुरानी बात हो गई कि जो है रेजोल्यूशन पास हो गया कि आपको करना ही पड़ेगा, और उसमें कंडीशंस थे, कोई एक रेजोल्यूशन में सब कुछ लिखा गया कि किस तरह से ये रेफरेंडम होगा। अब सवाल ये उठता है कि 370 कैसे आया। 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की रिफ्लेक्शन है हमारे संविधान में, इसलिए 370 आया है। अगर 370 हम नहीं मानते हैं आज की तारीख में, हम कह देते हैं हम इसको नहीं मानेंगे, जैसा कि कुछ इल इन्फॉर्म लोग ये डिमांड्स कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या किसी और के हों, या जो अपने आप को कहते हैं कि इसको हटाना चाहिए, वो बिना किसी डिटेल को जान के कहते हैं। अब सवाल ही उठता है 370 अगर लिंक्ड है रेजोल्यूशन सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, और वो कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते हैं, और उसकी बात मानी भी गई थी बाद में, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 48 में साइन किया गया था प्रेसिडेंट ने, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अटैच्ड है हमारे संविधान के एनेक्स्चर्स में, वही जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। उसमें से भारत का नाम है वो उसमें वैलिड नहीं है, भारत भारत रहेगा। उसके अंदर सेकुलरिज्म भी वैलिड नहीं है, उसके अंदर सोशलिज्म भी वैलिड नहीं है, उसके अंदर रिपब्लिक ऑफ भारत इंडिया वैलिड है, डेमोक्रेसी वैलिड है, लेकिन सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म जे.एन.के ऑर्डर में, जिसको कहते हैं जे.एन.के का संविधान, उसमें वो वैलिड नहीं है। वास्तविकता तो यही है। आज की तारीख में अगर आप कहें कि आप 370 को निकाल दो, और 370 में ही 35 ये भी है, जो 370 के साथ रेजोल्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें 35A भी है। अगर आप कहते हैं 370 बाहर हो जाए, तो 370 बाहर होने का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी बाहर। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाहर, तो कौन बाहर आप समझ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन से एक स्टेट आई, एक राज्य आया आपके पास, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी बाहर, तो वो भी बाहर। इस चीज़ को समझना बहुत बारीकी में चाहिए। समझा है लोगों ने भी, बड़े पहले हुए हैं, वो भी समझते हैं, और शायद हमारे देश के आज की तारीख में प्रधानमंत्री हैं या जो भी दूसरे हाई प्रोफाइल के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, या जो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, और वो सब इस बात को समझते हैं। लेकिन ये जो नीचे के लोग हैं, फक्त कैटेगरी के लोग हैं, जो पॉलिटिकल इल इन्फॉर्म लोग हैं, उस चीज़ को नहीं समझते, और शायद समझते भी हों, लेकिन पॉलिटिकल ड्रामा है, इलेक्शंस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ शोर तो मचाना है, पब्लिक को उल्टी इन्फॉर्मेशन देके। मतलब कहने का ये है कि इन चीज़ों को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझोगे, इलेक्शन हो सकता है आप जीत जाए, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, वही कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है। अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर को खोना है तो ठीक, हाँ, अगर जम्मू एंड कश्मीर चाहे, वहाँ की पब्लिक चाहे, वहाँ की असेंबली चाहे, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये जो आज नहीं है, किसी ज़माने में थी जब ये ऑर्डर पास हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वहाँ की पब्लिक कॉन्स्टिट्यूट दोबारा करे, और वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहे कि ठीक है, हम अब मर्ज होना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत इंडिया में, हमें अलग से संविधान नहीं चाहिए, तो ये हो सकता है। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। असलियत तो यह है कि पाकिस्तान के क्लेम भी गलत है कि हमारा है जम्मू कश्मीर, और हमारे क्लेम 100% तो आप नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए अलग दिया गया है उसको। हमने रेजोल्यूशन पास किया लोकसभा में, क्या रेजोल्यूशन पास करना काफ़ी था, क्योंकि पावर रेजोल्यूशन की भी लोकसभा के पास पास करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। पावर किस कॉन्स्टिट्यूशन ने किया, किस प्रोविजन उन्होंने किया था, कौन सा आर्टिकल परमिट करता है कि आप रेजोल्यूशन पास कर दीजिए, नहीं करता है। अगर वो रेजोल्यूशन वहाँ की असेंबली से ऑथेंटिकेट हो जाता, इंडोर्स हो जाता, तो ठीक था, हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। वो भी एक शायद ड्रामा ही रहा होगा। इसलिए आज की तारीख में सोच समझ के बात करनी चाहिए। कुछ भी कह देने से एक तो इंटरनेशनली गलत मैसेज जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जो कह रहे हैं ठीक है, अरे आप तो ठीक है, अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन दूसरे को भी मानना चाहिए। और असली बात तो ये है कि जो पब्लिक इफेक्ट हो रही है, वो जम्मू एंड कश्मीर की पब्लिक इफेक्ट हो रही है। उनको सोचना है कि वो क्या चाहते हैं। वो भारत में रहना चाहते हैं, इसलिए रह रहे हैं, नहीं तो वो भी चले जाते। लेकिन अगर आपको टॉर्चर करना करेंगे, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, मार पिटाई उनके लड़कों के साथ कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनको पिटाई इस तरह कर रहे हैं, सप्रेशन कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। ठीक है,
लाई की जगह है, लॉ एंड ऑर्डर की जगह है। आप जो करना है बातचीत से करिए, समझाइए उनको। हो सकता है वो गलत रास्ते पे चले गए हों, अंधेरों में घूम रहे हों, लेकिन समझाने का फर्ज किसका होता है? माँ बाप का होता है, बड़े भाइयों का होता है, दोस्तों का होता है। आप उन्हें समझा नहीं सकते तो श्योर क्यों हो जाते हैं? उनको कब तक पीटेंगे आप, और अपने को कब तक पिटवाएंगे? ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। समझदारी से काम लेना चाहिए। Well, just 370 and 35A, which are nowadays in limelight, must be clearly understood by each and every citizen of this country, because there has been spread of information. Information are moving as if there is no meaning at all. Constitution of India was not accepted by Jammu and Kashmir. Hari Singh, it is conditional acceptance declared on instrument of accession just signed in 1947 due to impact of Pakistan guerrillas on that public, who started burning their houses, looting them, and raping their daughters. At that time, Hari Singh sent a instrument of accession to Lord Mountbatten, who was president, the Colonel General at that time, post-independence, and remained there for 3 years. At that time, that was signed him to seek help, so that protection was given, defense was given to Jammu and Kashmir encountered Pakistan, and immediately Lord Mountbatten ordered, okay, now we have got Pakistan in our hands as a nation and it's our state, so it is our duty under our own constitution to honor the law of the Indian Independence Act to protect that state. And UN Charter allows that. And previously, before that accession, there was no authority, even because UN Charter doesn't accept anything to encroach land of another country. So now, because that as a status of another country has been deleted, omitted, so it's our country. At the time, our forces went there and helped Jammu and Kashmir, Hari Singh, and whatever area was cleared of guerrillas was cleared. And at that time, requirement was to for a kind of you can say referendum on behalf of public be given whether to access to Pakistan or to access to India. And Jawaharlal said, okay, we'll do it later on when question was raised by Mountbatten. But Mountbatten immediately said, Jawahar, go to UNO to raise this issue and have a ceasefire between Bharat and Pakistan. On the side, Pakistan also sent representative to UNO, and UNO were convinced because UK and USA were in mood to accept what Pakistan impressed them, and they were agreeing what Pakistan condition was. But our condition was diminished, and the resolution was raised by UNO that there should be a referendum conducted between Pakistan and JNK, and that by Pakistan for JNK public, whether JNK public intended to stay with Pakistan, it intended to stay with Bharat. But that could not be administered because of issue conditions that Pakistan did not with the army, while India also did not with the army, and the administration and responsibility was given to Bharat in India, but it did not realize at the time. However, people have been staying there peacefully for decades, and they are there as a democratic people, whereas JNK, a little different constitution was signed in 48 and 48. That constitution is a part of our constitution, but as an extra, it's not direct applicability. Our main constitution doesn't apply to Jammu and Kashmir, and only name applies. Means three conditions were there in instrument accessions. One was defense, external and telecommunication, etc. All other issues which were required as a part of constitution had a special status granted to Jammu and Kashmir. Means whatever else, Parliament had no value on that, President had no value on that, only Assembly had and has value on that. Any act of parliament, whatever act of parliament approved, are not applicable directly to Jammu and Kashmir. They have to approve those conditions, the provisions, only then it applies there. So what happens is that only three conditions apply there, and they don't recognize our constitution or their instrument of accession. If Article 370 exists, it is because of the instrument of accession, and Condition 3, 35A is also a part of that Jammu and Kashmir Constitutional Order 48. If that Article 370 and that
Jammu and Kashmir constitutional order are impacted upon. Let us say today, what people want, some misled people want that remove Article 370. As a common, I can say Article 370, if it is taken out, which is annulled in the Constitution of the country, Constitution of India, if this is removed, this means accession instrument is automatically removed. If accession instrument is automatically removed, means that state is removed from our control. This is what I understand, and this is a very dangerous state of affair. If you remove Article 370, and it implies that legal issue, legal considerations, and we have to loosen that state, I think it's a very dangerous situation, and it should not be. So, only route left is these three conditions, and these three conditions: external affairs and foreign policy, and defense, and communications, which were under our control, which have been our control since that time, should remain. We have to talk with these people, the population of Jammu and Kashmir, what they want, because Constituent Assembly, which approved this accession instrument, doesn't exist anymore. Assembly doesn't exist. Only power lies with people of Jammu and Kashmir, Assembly and Constituent Assembly. Either let that state constitute another Constituent Assembly and it should agree that we they should permanently merge into our constitution, and existing additional constitution, annexed constitutional order be removed, be taken out, and they be an integrated part of constitution. That is only solution. Otherwise, it's only beating about bushes, election issues, emotional issues, misleads. Everyone is misleading. Everyone is misled. Election issue for each and everything. This is very bad situation for a country. Our peace is disturbed. Our economy is disturbed. Everything is disturbed, and we have to avoid all this. So my only request to you is don't panic, don't spread false information, don't make fake news, and all leaders must understand first. They should analyze what is happening. Only top profile leaders know this, top profile advocates know this, and top profile intellectuals know this. But middle class and common people, they are being misled by these misinformations. It should be avoided. It is not in the interest of the nation that we should disseminate false information, and we are doing it. It is very wrong. Don't make it political. Don't try to solve these issues. That is the duty of each and every citizen. Of 58, of the sorry, 51A, Article 51A. Our rights are there, but our duties are also there, which we are not doing. We are not committing on them. That's very bad, really. I hope people will understand, read it thoroughly, with understanding, with polite mind, and not excite on such issues which are inflaming and burning and exploding issues for our nation. And that's all. Thank you very much, Jai Bharat.